அண்மை செய்தி. நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் என மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார். நாடு முழுவதும் இந்தியா கூட்டணி 300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெறும். மோடி மீண்டும் பிரதமராக வரப்போவதில்லை என மம்தா பானர்ஜி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இந்தியா கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் என மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் இந்தியா கூட்டணி 300க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெற்று மோடி மீண்டும் பிரதமராக கண்டிப்பாக வரப்போவதில்லை என மம்தா பானர்ஜி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். নিজের বেলায় আটি সুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি, তাই তো নিজে করবে না। নিজে করলে বিদেশি হয়ে যাবে, তা আপনি কেন করবেন? কেউ জমা করেনি, দুজন বাইরের লোককে নিয়ে এসে সারা ভারতবর্ষে জমা করেছে। কেউ করেনি, তার কারণ যারা আইনটা জানে, যারা দেখেছে, তারা দেখেছে যে এরা কি ডেঞ্জারাস। তাই এনআরসি আমরা করতে দিচ্ছি না। কে আমরা মানি না, নিঃশর্তে করলে করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। নিঃশর্ত অধিকার। আপনার কি করার দরকার? আগে নাগরিকত্ব রাজ্য সরকার দিত, জেলার ডিএমকে ইন্টারেস্ট করুন, ডিএমরা দিয়ে দেবে যখন যাকে প্রয়োজন মনে করবে। আমেরিকাতে কেউ থাকলেও 10 বছর থাকলে সে একটা গ্রিন কার্ড পায়। তাহলে কেন আপনি উল্টো নিয়ম করছেন? তাই মনে রাখবেন, এটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত। আর একটা চক্রান্ত করেছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, ওবিসিদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তপশিলীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, হিন্দুদেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। শুধু ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি লিডার। বিজেপির কিছু গুন্ডা, কিছু মাফিয়া আর কিছু লুটেরা বাহিনী। ভারতবর্ষে ইলেকশন আর হবে না। মোদি যদি আসে, আর কোনোদিনও ভারতবর্ষে ইলেকশন হবে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রটাকে শেষ করে দেবে, সংবিধানটাকে খেয়ে নেবে, হজম করে নেবে।